Okay, let us start with the problem set 2, geometry. So the question what is given to you in the problem set, keep a textbook with you. Some questions and their alternate answers are given. Select the correct alternative. Out of the following, which is a Pythagoras triplet? Please see they are given us multiple choices. Look at the B. 3, 4 and 5. Now you know the longest side is hypotenuse. The biggest value is 5, so this has to be 5 square will be 25. And what is 3 square plus 4 square? 9 plus 16 is 25. Therefore, what they ask you, which of the following is a Pythagoras triplet? The answer is B. 3, 4, 5 is a Pythagoras triplet. Now in a right angle triangle, if sum of the squares of the sides making right angle is 169, that means a square plus b square is 169. So what will be c square? Because you know in Pythagoras, see they are given us a square plus b square is 169. You have to find c square. Now you know c square is equal to a square plus b square. So c square is equal to 169. So c is equal to square root of 169. So c is equal to 13. So here our answer is again B. Now out of the dates given below, which date constitutes Pythagoras theorem? Look at the multiple choice question. Second is not possible. B is not possible. C बहुत different है. These also go for A. 15, 8 and 17. 15, 0, 8, 17. Suppose if you consider these are the sides of a right angle triangle, then this will be hypotenuse. 17 square is 289. So this has to be in combination, square of sum of the squares has to be 289. देखते हैं 225 plus 64, 289. Therefore, here answer is A. Now fourth question देखो objectives में, if small a, small b and c, these are small alphabets, are sides of a triangle and a square plus b square equal to c square, what type of triangle is this? Of course it's a right angled triangle. This is Pythagoras principle they are given us. Find perimeter of square if its diagonal is 10 root 2. ये अच्छा question दिया है. This type of question can be asked in the very first question. देखो ये square है. This diagonal is 10 root 2. This is a square. So this is, you know, very well, sides of a square are congruent. So if ABCD is a square, AB equal to BC equal to CD equal to AD given to you. They are given us diagonal. We have to find length of the side of a square. So AB square, we can write in Pahla first, let quadrilateral ABCD be the required square with side XCM each. ये supposition है. Therefore, AB equal to BC equal to X centimeters. Centimeters, yes. Diagonal of a square. You have to find perimeter of a square, no? Now, angle ABC 90.
each angle of, or you can write property of a square directly. Therefore, in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. You know this Pythagoras theorem. Therefore, 10 root 2 the whole square equal to x square plus x square. Therefore, 2x square is equal to 200. Therefore, x square equal to 100. X equal to 10. So, each side is 10. Therefore, perimeter of square 4 into side. So 4 into 10, 40 centimeters. So let's see which. So here question number 5 का answer है D. Now next see question C. देखो the altitude on the hypotenuse of a right angle triangle divides it into two parts of length 4 centimeter and 9 centimeter. Suppose ABC, this is 90, so this AC will be hypotenuse. This is 9 and 4. And suppose this is D. So, what is BD square? BD square equal to AD into DC. So, this is 9 into 4. So, BD square, BD is equal to square root of 9 into 4. 3 into 2, 6. So, question number 6 का आंसर है C, that is 6 centimeter. Next देखो, height and base of a right angle triangle is 24 centimeters and 18 centimeters. Find the length of a hypotenuse. ये तो आप जानते हो, 24 square is 576, 18 square is 324. ऐड करोगे तो 900 मिलेगा. 900 का मतलब 30. Yes, so we get 30 है, आंसर दिया हुआ है. So B is 30. मतलब sorry, answer of question number 7 is B, which is 30 centimeters. अभी देखो in triangle ABC, AB is 6 root 3, AC is 12 and BC is 6 centimeter. Find the measure of angle A. Angle A is a side opposite AC. BC. AB is AC is longest side ना, ये AC है और ये B है. BC is 6, AC is 12, 6 और ये 6 root 3. हमें एंगल A फाइंड करना है. What is angle A? So this 30, 60, 90 triangle, देखो ये side opposite A is half of the hypotenuse. So BC is half of AC. So this has to be 30 and this is AB is root 3 2 into AC. तो ये 60 होना चाहिए. सो एंगल ए कितना होगा? देखो क्या टेक्स्ट बुक में ऑप्शंस दिए हैं. सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए 30, 60, 90 एंड 45. सो 30 आंसर इज ए. अब जाते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट नाउ.
ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं. We have completed the objectives. Now we are into questions which can be asked for 2 marks. जैसे these questions can be asked for 2 marks in the very first question. पहला क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम का. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. Solve the following examples. Find the height. Find the height of a equilateral triangle having side 2a. चलो ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन. Find the height of an equilateral triangle. Height दिया है AM, suppose AM is your height. Now what given to you? Given क्या है? Triangle ABC is equilateral. Sorry. प्रॉपरली करते हैं. This A, B, C, equilateral triangle. AM is perpendicular. What is given to you? Given is triangle ABC is equilateral. What is the length of the side? 2a. AB equal to AC equal to BC equal to A. Find, one more thing they are given us. AM perpendicular BC. Find A. Start now. This is 2A. This also 2A. तो ये A और ये हो जाएगा A. How? कैसे? Let's prove. Solution. पहला angle B equal to 60 degrees. Each angle of equilateral triangle is 60 degrees. Statement number 2. Angle AMB equal to 90 degrees. This is given. Statement number 3. Therefore, in triangle AMB, angle BAM equal to 30 degrees. Reason from statement 1, statement 2 and sum of measures of angles of triangle is 180 degrees.
Statement number 4. Therefore, triangle AMB is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. From statement 1, statement 2 and statement 3. From above 3 statements. Statement number 5. Therefore AM सीधा लिखो ना. Therefore AM, so there is side opposite, ये 60 है, side opposite 60 will be root 3 upon 2 into hypotenuse is AB. Side opposite or application of property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore, this is root 3 upon 2 into AB. AB कितना है? 2A. 2 गया. We get root 3 into A. This is value of AM. AM की वैल्यू हमें मिल गई. It's very simple. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Do sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter are the sides of a right angle triangle. They form a right angle triangle. बताना है. Give reason. So let us find out. Question number 2. 25 square is 625 and therefore दूसरा कौन सा 2 क्वेश्चन हैं? 2 साइड्स है 7 and 24. Therefore 7 square (24 square) कितना होता है? 7 sevens are 49. 24 is 576. कितना होता है? 49 plus 576 15 5 12 625. Therefore 25 square is equal to 7 square plus 24 square. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, we can conclude or infer, or we can say that 7, 24, 25 and 25 form a right angled triangle. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ. Let's see question number 3. Question number 3 देखते हैं क्या दिया है उन्होंने. Find the length of diagonal of a rectangle. Find the length of a diagonal of a rectangle. Okay. Having sides 11 and 70 centimeters. Sorry, 60 centimeters. ये वापस पाइथागोरस थ्योरम ही है. ये मेरे ख्याल से 3rd क्वेश्चन है. तो पहले हम लोग विल ड्रॉ रेक्टेंगल फर्स्ट. A B C D रेक्टेंगल.
find the length of a diagonal of a rectangle who is having side 11 and 60 सेंटीमीटर. ओके, तो ये 60 सेंटीमीटर है, ये 11 cm है. We have to find the length of a diagonal BC. So हमें लिखना पड़ेगा solution. Let quadrilateral ABCD. देखो यहाँ उन्होंने कोई फिगर नहीं दी है, कुछ नहीं दिया, तो नेमिंग का भी फिगर नहीं. देयर आर नो नेम्स ऑल्सो इन फिगर. फिगर ही नहीं है तो नाम क्या होगा उसका. तो हमें फिगर ड्रॉ करना है, उसको नेम करना है, उसको साइज मेंशन करना है, और वॉट एवर वी डू वी हैव टू शो इट इन द सॉल्यूशन. तो देखो, लेट quadrilateral ABC be the given rectangle with BC equal to 60 centimeters and AB equal to 11 centimeters. This is our supposition and data. Data is given information जो दिया है. These are the given information. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट नंबर 2. अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो. नो डोंट रन. इफ यू डोंट वांट टू राइट स्टेटमेंट, डोंट राइट स्टेटमेंट. मतलब 1 2 3 से लिखो मत, सीधा चलो करो. देयरफॉर एंगल ABC equal to 90 degrees. Each angle of rectangle is 90 degrees. Therefore, in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. ये है Pythagoras theorem. So AC square क्या होगा? AB is 11 square plus 60 square. 11 square is 121. 60 square is 3600. यह आता है आपका 3721 AC square. So AC taking square root on both sides. ये होगा 3721. So AC will be 61 centimeters. Taking square root on both. Square root कैसे निकालना है? I have told you. याद है ना? बताता हूं. देखो, ये 60 है और 60 में हमने 111 ऐड किया है. सॉरी, 11 का स्क्वायर ऐड किया है, तो 60 के आगे ही होगा. इट्स अबाउट 60. चलो, तो 60 स्क्वायर यू नो कितना होता है? 3600. तो 65 का स्क्वायर लेते हैं ना. 5 5 25, 6 7 42. देखो, तो ये जो नंबर है 3721 हैज टू बी बिटवीन 60 एंड 65. ये कंफर्म हो गया. अब ये लास्ट डिजिट देखो क्या है. 3721 में लास्ट डिजिट इज 1. तो जो भी नंबर होगा उसका अगर यूनिट प्लेस 1 होगा तो उसका स्क्वायर भी यूनिट, स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट प्लेस भी 1 होगा. तो ट्राई विथ 61. 61 into 61. 1 1s are 1, 1 6 are 6. 6 1s are 6, 6 is 36. 1 12 7. चलो ये हो गया. अच्छा, तो लिखवा देखो answer. Therefore, the length of diagonal of given rectangle is 61 centimeters. इरेज करते हैं इसको. बहुत आसान क्वेश्चन है. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन. इनफैक्ट दिस चैप्टर, ये जो
पाइथागोरस चैप्टर है, वो सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का. दिस इज इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ऑफकोर्स और भी कोई इजी चैप्टर्स हैं, ऐसे मेंसुरेशन इजी है, लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है, ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है. ट्रिग्नोमेट्री वो तुमको लगता है वो क्या, लोग पीपल अराउंड यू टॉक रबिश दैट इट्स डिफिकल्ट. नहीं, बहुत आसान है. लेट्स स्टार्ट नाउ हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. Find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 and 12. So, वापस ये 9 है, ये 12 है, इसको PQ, ये ABC रखो, अच्छा है. ABC. You have to find AC. Solution. Let triangle ABC be the given right angled triangle with angle ABC equal to 90 degrees. AB is equal to 12 कुछ centimeters is given. Centimeters, and BC is equal to 9 centimeters. This you know is what? Supposition and data. Data why? Because this information is provided there. Therefore, AC square equal to AB square plus BC square. You know this is why. Pythagoras पूरा लिखो वर्ड्स में. Therefore, AC square is equal to 12 square plus 9 square, 144 plus 81. So AC square कितना होगा? 144 plus 81 is 225. 225. Therefore, AC equal to square root of 225. Therefore, AC equal to 15 centimeters. आप बोलोगे मैंने इसको 15 सेंटीमीटर फास्ट कैसे कर दिया, तो आपने स्क्वायर रूट कैसे निकाला? आई विल टेल यू. हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो. 15 का स्क्वायर करते समय इफ आई वांट स्क्वायर ऑफ 15, तो मैंने आपको टेक्निक दिया था लास्ट कुछ पिछले वीडियो में कि यूनिट प्लेस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये 10 प्लस 1 है, सो 1 प्लस 1 हमें ऐड करना है, तो ये कितना होगा 2, तो 2 हमें यहाँ लिख देना है 25. अभी उसको रिवर्स फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25. 225 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आई विल टेक दिस फर्स्ट. ये पहले 2 डिजिट लूंगा, ये होगा सिर्फ अगर लास्ट 2 डिजिट 25 हैं. ओके, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, राइट. इसका रिवर्स जा रहे हैं, और ये क्या है 2. 2 का मतलब क्या, 2 into 1. टेक द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फैक्टर. 2 का फैक्टर का स्मॉलेस्ट. ये तरीका. Final answer. Therefore, hypotenuse of given a right angled triangle is 15 centimeters. ये हो गया अपना fourth question. Now we go to fifth question. Fifth question मतलब question 2 का 5, सब question 5.
A side of an isosceles right angle triangle. ये isosceles right angle triangle है, मतलब probably easy 45, 45, 90 triangle. Find its hypotenuse. Side of I, उन्हें x दिया हुआ है. कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 5th. Isosceles, you know what is meant by isosceles? When two sides of a triangle are congruent, it is an isosceles triangle. तो ये isosceles right angle triangle है, इसको हम लोग PQR लेते हैं. And this, they are given this as x. बराबर ना? Find the sides of an isosceles right angle triangle is find the hypotenuse. Hypotenuse find करना है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट ट्राइंगल PQR बी दी गिवन isosceles right angle triangle with PQ equal to QR equal to X, कुछ नहीं, इसको units, and angle Q equal to 90 degrees. This is supposition and data. ये supposition data क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को फिगर नहीं दिया है, फिगर का नामकरण नहीं किया हुआ है, तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है. वी विल हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड ऑल्सो नेम द फिगर. ओके, एंड देन वट एवर फिगर यू आर ड्रॉन, हमें बताना पड़ेगा दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द गिवन isosceles right angle triangle with angle Q as 90 and remaining two sides जो भी हमने ये PQ and QR has X degrees. Therefore it has to be PR, has to be hypotenuse. So PR square will be PQ square plus QR square. ये जानते हो तुम लोग क्या होगा? Pythagoras theorem. पूरा लिखो, ऐसा मत करो मैं करता हूँ ऐसे. Pythagoras theorem. Therefore PR square equal to X square plus X square. So PR square equal to 2x square. Therefore PR equal to square root of 2x square. तो ये होगा x root 2 units. फाइनल आंसर लिखो. Therefore hypotenuse of given isosceles right angled triangle is x root 2 units. इरेज करते हैं. सब क्वेश्चन 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? अच्छा, यहां दिया है गिवन यू द ट्राइंगल विथ नेम. सिर्फ हमें ड्रॉ करना है. डायगोनल ट्राइंगल PQR with PQ as root 8, QR as root 5, PR as root 3. Is quadrilateral PQR a right angle triangle? Yes, it is a right angle triangle. 5 plus 3 is 8. The longest side is PQ, which is root 8.
QR is root 5 and PR is root 3. QR is root 5 and is root 3. अभी फिगर ड्रॉ मत करो, क्योंकि अगर ड्रॉ किया तो मार्क्स गए, बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो कैसे वो हैबिट हम लोग पहले सब कर रहे थे ना, तो फ्लो में मेरे ड्रॉ कर दिया. नहीं, ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं. सो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? PQ. क्वेश्चन सॉल्यूशन 6. लॉन्गेस्ट साइड इज PQ. तो लिखो PQ स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 द होल स्क्वायर इक्वल टू 8. ये पहला क्वेश्चन. दूसरा QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर रूट 5 द होल स्क्वायर प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर. दिस इज 5 प्लस 3. दिस इज 8. QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ये है 2. Therefore from 1 and 2 PQ square equal to QR square plus PR square. Therefore using converse of Pythagoras theorem, we can say that the given sides form right angled, therefore triangle PQR is right angled क्वेश्चन नंबर 2 completed. Now we go to question number, actually main question 3, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. Now we go to main question number, the main question. So sub question number 2 के सब all sub questions we are completed. सब questions खत्म हो गए. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. एकदम इजी क्वेश्चन चैप्टर है. देखो, we'll read the question. In triangle RST, क्या दिया है? In triangle RST, in triangle RST angle S is 90. तो पहले ड्रॉ करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3. ओके. इन ट्राइंगल RST एंगल S is 90. तो ये है आपका S. एंगल T is 30. तो ये होगा एंगल 30. तो ये होगा R. TR is 12. हमें फाइंड करना है दिस टू. तो देखो पहले गिवन in triangle RST, angle S is 90 degrees, angle T is 30 degrees, TR equal to 12 centimeters है या यूनिट्स हैं? सेंटीमीटर्स दिया होगा. ओके. RT find RS and ST. Solution. In triangle RST,
angle S is equal to 90 degrees and angle T is equal to 30 degrees. This is given. Statement number 2, therefore angle R will be 60 degrees. Reason from statement 1, and sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. Statement number 3, therefore triangle RST is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle from statement number 1 and statement number 2. So ये 60 हो गया, ये 30 है, तो साइड अपोजिट 30 क्या है? Therefore SR equal to half of RT. This will be half of 12. Therefore SR equal to 6 centimeters. Also, what is ST? ST is side opposite angle 60. So it will be root 3 upon 2 into RT. Therefore root 3 upon 2 into 12. Therefore ST is 6 root 3 centimeters. इसके ये पूरा का रीजन है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 फाइनल आंसर वर्ड्स में लिख दो यहाँ नीचे ऐसे. Therefore RS equal to 6 centimeter and ST 6 to 3 centimeter. Question number 3 completed. Now we go to question number 4. Yes, question number 4. Find the diagonal of a rectangle whose length is 16 centimeter and area is 180. Very बहुत interesting question है. Assume करते हैं कि ये अपना rectangle है. Find the diagonal of rectangle whose length is 16. ये लेंथ 16 सेंटीमीटर है. ये फाइंड करना पड़ेगा. यस. सॉरी. This is question mark. Question mark. So call it PQ R S. You have to find width, means breadth of a rectangle, and after that you go and find diagonal of a rectangle. पहले हम लोग area दिया हुआ है ना, तो area से area is what is the area of rectangle? Length into breadth. So breadth find करो. Once you get the breadth, go for Pythagoras theorem and find the diagonal. चलो. लेकिन उसके पहले यहाँ उन्होंने फिगर नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, हमने दिया है, इसलिए उसको मेंशन करना पड़ेगा. बिकॉज एवरी स्टूडेंट विल गिव डिफरेंट नेम्स ना, यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ बताना पड़ेगा. सॉल्यूशन. लेट quadrilateral PQRS be the
given rectangle with QR 16 centimeter. Statement number 2, ये अपना supposition. And data, this value is taken. Now in triangle, area of a quadrilateral PQRS is 192, दिया हुआ ना, 192 square centimeters. But area of a quadrilateral PQRS is PQ into QR. Area of rectangle is length into breadth. Therefore, ये है 192 equal to PQ into 16. So what will be PQ? PQ will be 192 upon 16. Therefore, PQ will be 16 1 or 16, 16 2s are 32. So we got here as, ये आ गया 12. Now, statement number 4. In triangle PQR, angle PQR equal to 90 degrees. Reason, each angle of rectangle is 90 degrees. याद रखो, each angle of rectangle is 90 degrees. तो अभी पाइथागोरस का इस्तेमाल करो. Therefore, PR square is equal to PQ square plus QR square. Reason, Pythagoras PR square क्या होगा? ये PQ is 12 square plus 16 square. 12 square is 144. 16 square is 256. बराबर ना? ऐड करो, 400 आएगा. यह जगह नहीं तो वहां लिखता हूं मैं. Therefore, PR square root of 400. Taking square root on both sides. So, PR equal to 20 centimeters. Answer. Therefore, उन्होंने क्या पूछा है? Find the diagonal. Therefore, diagonal of given rectangle is 20. Question number 4 completed. अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? देखो,
find the length of the side of a perimeter of equilateral triangle. Find the length of the side, मतलब पहले लेंथ ऑफ साइड फाइंड करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is √3 सेम, सिर्फ हाइट दिया हुआ है, पेरीमीटर और साइड फाइंड करना है. चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5. बहुत आसान है. सी ये 60 है, ये 90 है, तो 30 हो जाएगा. इनफैक्ट हमें 3690 ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज और सीधा निकाल दो आंसर. सॉल्यूशन. Let triangle ABC be the given equilateral triangle with AM equal to √3 and AM perpendicular BC. This is as usual supposition जो हम लिखते हैं हम supposition and data. ये पहला स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट नंबर 2. In triangle AMB, angle B is equal to 60 degrees. Reason, each angle of equilateral triangle is 60 degrees. Statement number 3. Angle AMB 90 degrees. Given AM perpendicular BC. Or simply writes AM perpendicular BC. Statement number 4. Therefore angle BAM equal to 30 degrees. इसका रीजन होगा sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. ये मैं एंगल सकता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है. ये 30 है, 60 है, 90 है, तो थर्ड एंगल विल बी 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर 60 प्लस 50. 60 प्लस 50 इज 150. 60 प्लस 90 150 और 180 में से 150 माइनस करो तो आपको 30 आता है. स्टेटमेंट नंबर 5. देयरफॉर ट्रायंगल AMB इज 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. From segment segment 6. Therefore, AM is √3/2 into hypotenuse AB. इसका वजह है property of
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एम तो दिया हुआ है √3 अपॉन 2 इंटू ए बी। देयरफॉर ए बी कितना होगा? इट विल बी √3 इंटू 2 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंसल। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या यूनिट्स है? सेंटीमीटर्स। हमें पेरीमीटर ही फाइंड करना है। Therefore, पेरीमीटर हम P लिख सकते हो, चलो पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 3 इंटू AB, 3 इंटू साइड, 3 इंटू AB, 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखो। Therefore, length of side and perimeter of equilateral triangle is 2 cm and 6 cm respectively, इज्जत से। So we completed question number 5. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अभी। वही डालना पड़ता है, यूज करके खत्म हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC seg AP is the median. So question number 6, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है क्या ये? नहीं, so triangle ABC, M is the median. मीडियन का मतलब आप जानते हो ना, M is the midpoint of BC। जो P दिया है, M नहीं। अच्छा, seg AP is the median, BC is 18। तो यहां से ये 18 यूनिट्स है, एंड A square plus B square is equal to 260। AB square plus AC square equal to 260। Find AP. In triangle ABC, AP is median to side BC. BC is 18 units. You have to find AP. Solution चालू करते हैं। पहला
BP is equal to half of BC. Reason? P is midpoint of BC by definition of median. Therefore, BP equal to half into 18. Therefore, BP equal to BP is equal to 9 units. Circle number 2. Therefore, in triangle ABC, यहाँ मैं पॉज ले रहा हूं. See, BP is equal to half of AC. That's easy because AP is the median. So, आप definition of median जानते हो. What's the definition of median? A segment joining the vertex and midpoint of the opposite side. So, P is the midpoint of the opposite side, that is BC. So, BP will be half of BC. So, BP is equal to half of BC. 18 दिया है तो BP is 9. ये तो आ गया. अभी क्या है, देखो ये हिंट दिया भाई, 2 हिंट काफी है. AP is the median और ये मीडियन दिया हो और ये वैल्यूज दी हो. सिर्फ पहले मीडियन दिया हो तो भी याद रखो, मीडियन दिया है तो फर्स्ट सोचो कि क्या एपोलिनस प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कुछ राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हो तो हमें सोचो पाइथागोरस भी इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो 100% इसमें एपोलिनस प्रिंसिपल होगा. In triangle ABC, AB square plus AC square is 2 times AP square plus 2 times BP square. Apollonius theorem. ये तो दिया हुआ है, this 260 बराबर है ना, 260 है ना. 260 equal to 2 times AP हमें फाइंड करना है. We have to find AP square plus 2 times 9 square. Therefore 260 equal to 2 AP square plus 18 2s are 36. No, sorry. 2 into 81 this is. Therefore 260 equal to 2 AP square plus 162. Therefore, ये होगा 2 AP square equal to 260 minus 160 98. Therefore, AP square is equal to 49. Therefore, AP is equal to 7 units. Taking square root on both. With that, we complete question number 6. Okay, let's start with now. Question number 7. See what they are given us. They are given us triangle ABC is equilateral triangle. Point P. Your point P is such that point P is on BC such that this PC is 1/3 of BC. AB is given to as 6. You have to find AP. देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. So AB, AC and BC all 3 will be of equal length 6 cm. तो हम क्या करेंगे? We will first show that and we'll find the value of PC. पहले PC की वैल्यू निकाल देते हैं. ओके, PC निकालने के बाद हम MP की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, एंड देन वी गो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AM. ओके,
solution first. यहाँ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन ऊपर ले लेते हैं. कंस्ट्रक्शन उसके बाद प्रूफ चालू करते हैं. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेग AM perpendicular side BC such that B dash M dash P dash C. याद रखो. Now start with the solution. AB equal to BC equal to AC equal to 6 centimeters. इसका रीजन क्या है? प्रॉपर्टी sides of equilateral triangle are equal. Statement number 2. Therefore, ये लो, PC is equal to 1/3 BC. This is given. So what will be PC? PC will be 1/3 into 6. So PC will be 2 centimeters. Third, in triangle AMC, angle C is equal to 60. Reason, each angle of equilateral triangle is 60 degrees. Statement number 4. Therefore, angle AMC equal to 90 from construction. Statement number 5. Therefore, angle CAM equal to 30 degrees. ये 60 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल जो है ना, entire angle will be 30 degrees. Reason, from statement 3, statement 4 and sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. 6. Therefore, triangle AMC is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. From statement 3, statement 4 and statement 5. Statement number 7. Therefore, what will be AM? AM is hypotenuse 60, √3/2 into AC. Property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore, AM की वैल्यू क्या होगी? √3/2 into 6. Therefore, AM will be 3√3 centimeters. 8. हमें CM फाइंड करना है. CM is equal to side opposite 30. So is 1/2 into AC.
Again, property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. ये नहीं है अभी हम लोग we are doing this question only. 1/2 into 6, 3 centimeters. Statement number 9. हमें MP निकालना है PM. Therefore, CM is equal to CP. Yeah. CM is MP plus PC. M dash, P dash, C. Therefore, CM कितना है? 3. MP we have to find out. PC is 2. Therefore, MP will be 1 centimeter. 3 minus 2. 10 centimeters. Now go to in triangle AMP. We know this has 1 centimeter. AM is 3√3 centimeter. अभी AP निकालो. In triangle AMP, angle AMP is 90. Therefore, AP square equal to AM square plus MP square. Pythagoras theorem. So क्या होगा AP? AP square will be AM 3√3 the whole square plus 1 the whole square. So ये 9 to the 27 plus 1. AP square is equal to 28. AP is equal to 2√7. 7 4s are 28. Got the answer. Good important question. ये important question और ये भी important question याद रखो. Erase करो. And then we'll do again, draw it, no issue. इसको वापस draw करेंगे. I thought I will be able to do it, लेकिन नहीं लेंदी हो जाता है. ये क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा बड़ा था. This can be asked for little bigger marks question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. PMN. टेक्स्ट बुक पास लाता हूं. वो दिखने को नहीं तो आई हैव स्पेक्स, वही डिफिकल्ट दूर से देखने तकलीफ होती है. 9 ट्राइंगल PMN और QR है. This is A, this is A, this is A. A is the length, हाँ, और ये भी A है. We have to find PM and PN. Sorry, 2 करना है आपने को. We have to prove PM equal to √3. To prove PM equal to PN equal to A√3. Given reflectix.
टेक्स्ट बुक में देखो गिवन कंस्ट्रक्शन, अब आप बोलोगे सर गिवन टेक्स्ट बुक में लिखो, गिवन टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। नहीं दिया है, ध्यान से देखो, दे आर गिवन अस इन द एडजॉइनिंग फिगर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है मैं टेक्स्ट बुक में वो यहाँ लिख चुका हूँ। थोड़ा मजाक करता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए बच्चों के साथ, रिलेशन भी बिल्डअप होता है। कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं हम ऐसे तो नहीं ले पाएंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो ये ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल, और हमें PM फाइंड करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम 30, 60, 90 प्रूव कर सकें। ओके, चलो, तो 90 के लिए हमें ये आपका कंस्ट्रक्शन, इसको हम S लेते हैं, T लो कुछ भी लो, ये हो गया आपका 90। एपलनेस प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। देखो ये ए है, दिस ऑल्सो ए, सो PQ बिकम्स अ मीडियन, और PM फाइंड करना है, दिस गिवन टू यू, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, सो वी कैन यूज एपलनेस प्रिंसिपल। ये क्यों लिया मैंने? इसकी जरूरत है या नहीं? आई वॉन्टेड टू डू 360। देखेंगे, जरूरत होगी तो देखेंगे। एट प्रेजेंट इसको थोड़ा सा, ये जो कंस्ट्रक्शन है जरूरत पड़ी तो देखेंगे, आई डोंट नो। लेकिन हम लोग एपलनेस प्रिंसिपल से कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें? भूल जाओ पार्ट, हम जगह छोड़ते हैं, स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। NQ equal to QR equal to A units given. Statement number 2. Therefore, in triangle PMR, देखो in triangle PMR sec PQ is median to side MR from statement number 1 and definition of median. देखो NQ is equal to QR, इसका मतलब Q becomes a midpoint of MR. So naturally PQ becomes median to side MR. From statement definition of median, statement number 3. Therefore, in triangle PMR, PM square plus ये PM square plus PR square 2 times PQ square plus 2 times MQ square, ये है Apollonius theorem. Therefore, PM square plus PR is A, this is A square plus, sorry, equal to 2, PQ भी A दिया है, 2A square plus 2A square. So PM square equal to 4A square minus A square. So PM square 3A square
Therefore PM equal to a root 3 units. हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी. Statement number 4. Similarly, we can show Pn equal to a root 3 plus answer. Pm equal to Pn equal to a root हो गया. Now we go to question number 9. Prove that sum of the squares of a diagonal of a parallelogram. अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क करो, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये 4 मार्क के लिए आ सकता है, लगता बड़ा है, आंसर बहुत इजी है. जो कह दिया है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल of a parallelogram is equal to the sum of the squares of the square is equal to sum of the squares of the side. Sum of the squares of the diagonal, sum of the squares of a diagonal, okay. पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो. Call it P, Q, R, S, O. ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपको मालूम होना चाहिए. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट. और दूसरा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब ये ध्यान दो, ES and Q are congruent, opposite sides of parallelogram are congruent, so PQ and S are congruent. Same way, PO will be congruent to OR because diagonals of parallelogram bisect each other. Same way, QO equal to SO, diagonals of parallelogram bisect each other. अभी हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव sum of the squares of a side, PQ square plus QR square plus SR square plus ES square equal to PR square plus QS square. Sum of the squares of a diagonal, sum मतलब addition of squares of a diagonal equal to sum of the squares of the corresponding sides of a parallelogram. गिवन तो है ही नहीं, तो हमें सपोजिशन देना पड़ेगा.
देखो उन्होंने कोई भी आपको पैराग्राम का नेमिंग दिया नहीं है। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है नेमिंग के साथ। सॉरी, हमें नेमिंग दिया नहीं है, इसलिए हमें पैराग्राम ड्रॉ भी करना है और उसको नामकरण विधि भी करना है, मतलब नाम भी देना है, इसलिए सब हमें इस पे लिखना पड़ेगा। लेट quadrilateral PQRS be the given parallelogram, okay, such that diagonal PR and diagonal QS intersect each other in O. This is your supposition. Statement number 2. PO equal to RO equal to half of PR. Third, QO equal to SO equal to half of QS. इसका रीजन है diagonals of parallelogram bisect each other. Statement number 4. तो कोई भी ट्राइंगल लो, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं PQS. Therefore, in triangle PQS, sec PO is median to side QS from statement 2, from statement 1 and statement 2. Statement number 5. Therefore, since O is the midpoint or PO is the median, ये ट्राइंगल में हम एपोलोनियस लेते हैं। PQ इक्वल टू, ये नीचे का ट्राइंगल लेते हैं ना, अच्छा रहेगा, तो PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ जाएगा। तो PQR लेते हैं और ये होगा अपने QS, तो ये होगा सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 3। ओके, देयरफॉर तो ये होगा PQ स्क्वायर प्लस QR square equal to 2 times QO square plus 2 times PO square. Yes. Therefore, we get PQ square plus QR square equal to 2 into, what is QO? QO is QS upon 2 the whole square, and PO is PR upon 2 the whole square, from statement number 2 statement number 3. Therefore, PQ square plus QR square equal to 2 into QS square upon 4 plus 2 into PR square upon 4. Cancellation karo. So we get PQ square
PQ square plus QR square equal to QS square upon 2 plus PR square upon 2. इसको याद रखो. This is statement number 6 from statement number 7. Similarly, we can show in triangle. ये लिया अब उस साइड का triangle PSR. We can show this SR square plus PS square equal to same QS square upon 2 plus PR square upon statement number 8. Add these two statements. Therefore, PQ square plus QR square, देखो PQ square plus QR square plus SR square plus PS square equal. देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. I got left hand side. Now take right hand side. QS square upon 2 plus PR square upon 2. तो ये 2 times हो जाएगा. 2 times और ये भी 2 times PR square upon 2. देखो PS square upon 2 plus PS square upon 2 times PS square upon 2, PR square upon 2 plus PR square upon 2 is 2 times PR square upon 2. A 2 cancel. Therefore, we get PQ square plus QR square plus SR square plus PS square equal to QS square plus PR square. Hence, proved. इजी क्वेश्चन था. इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट